I am Dr. Fahim Mushtaq. Today we are going to discuss how to choose a title with its attribution. This is the lecture series of Advanced Research Methodology. Sometimes students are assigned with their research paper topic, but if you are fortunate enough to have such an option, choose your topic wisely. First of all, think about choosing a challenging topic you are interested in. Then you will not be bored when doing the research because you are sure to discover something new and you will enjoy the writing process. Don't select subjects that are too technical or general. The motivation is also arises when you have to select your topic wisely or where you are interested in. First impression when you choose your title is the last impression. Always remember that when you choose your topic or title, which associated with you throughout the life. How? For example, if you are doing any master degree or PhD degree, you are choosing your title, it will mention in your degree and throughout your life, wherever you move for your uh, any opportunity for job or something else, it will associated with you. When you choose your title or attribution, what is the attribution? With the title, you have to mention your name, not only your name, all the author who have contributed in the research, in your research. For example, maybe you are a student, you are working under the supervision of your supervisor or co-supervisor. These all are your team member. You have to include your name with the name of your supervisor and co-supervisor. Also you have include the affiliation, email address. These are the attribution. Its main purpose is to draw people in and get them interested in what you have to say. Also, in other word, टाइटल एक्चुअली आपके कंप्लीट थीसिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. आपका जो थीसिस है या ऐसे है, उसको आप छोटा सा एक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, विच इज़ द टाइटल. If your title is too broad, your research paper is unlikely to be successful because it will look like a general overview. You should narrow down your topic down to a certain aspect, concept, or idea, or make it specific and manageable. For example, if your topic is encryption algorithms, you may have to choose, or you may narrow down the your topic into Randial encryption algorithm or keys
or another DES encryption algorithm, 3DES high C encryption algorithm. Or if you want more narrow down, we can say that high C encryption algorithm based on coordinate geometry, or any, we can say that mathematical modeling for, or you can say using what, using, you may use the hybrid cube if you want more narrow. Okay, otherwise you have to mention your scheme and its purpose. Your title should be related to your topic. According to the goal you choose, a research paper has to be either analytical or informative or argumentative. इन अदर वर्ड हम इसे कह सकते हैं कि हम इसे मोर समराइज करके मेंशन करते हैं टाइटल को, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स, बहुत बड़ा टाइटल नहीं करना, वो एक कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा और आपका जो कंप्लीट टॉपिक है उसके आइडिया सही से क्लियर नहीं होगा। उसे टू स्पेसिफिक रखना है, ठीक है। और आपके जो टाइटल है उसमें जो कीवर्ड्स हैं आपके, जो आपके कोर कीवर्ड्स हैं, आपने वो ज़रूर उसमें मेंशन करने हैं। और क्योंकि जो भी आपकी कंट्रीब्यूशन, जो मेथडोलॉजी आप प्रपोज करना चाह रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रही हो आपके टाइटल से। Make the title as informative as possible, even it seem a bit word. To spice up a boring title. Why? Because अगर आपने देखा होगा कि गूगल स्कॉलर आप जब भी करते हैं, आपको पेपर का टाइटल ही शो हो रहा होता है। अगर उसमें अट्रैक्शन नहीं होगी, बोरिंग होगा, तो आप समटाइम फर्स्ट टू लिंक ओपन करेंगे, देन थर्ड स्किप कर देंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ अगर आपको बोरिंग लग रहा होगा, थर्ड उठा लेंगे, फोर्थ उठा लेंगे, फिफ्थ मिस कर देंगे। इस तरह आपको जो बोरिंग लगेगा वो रिसर्चर उसको रीड नहीं करता, वो फील करता है कि मे बी ये शायद रिलेटेड नहीं है, मे बी टाइटल से ही वो गेस कर लेता है कि विच काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ द पेपर वो जज कर लेता है कि क्या हो सकती है। तो इसलिए अट्रैक्शन आपके टाइटल से होनी चाहिए, ताकि जो रिसर्चर है उसको अट्रैक्ट होके उस आपके पेपर को रीड करें। जब आप टाइटल को चूज़ करते हैं, कुछ वार्निंग्स हैं जो आपने चीज़ें को ट्राई करना है कि अडॉप्ट ना करें, उनको मिनिमाइज़ करें, बल्कि ना होने के बराबर करें। लाइक दैट, डोंट मेक योर टाइटल ऑफेंसिव, नो प्रोफेन और फूल लैंग्वेज। You want to give the potential reader the best possible view of yourself. Don't make the title too obscure or too unclear. The title should give a potential reader some idea of what the article is about. Similarly, मैं अभी डिफाइन जो कर रहा था आपको, कि आपके आइडिया से ही क्लियर हो जाता है, आपके टाइटल से ही क्लियर हो जाता है कि आप क्या आइडिया लेके जा रहे हैं, आपने पेपर में किस तरह पेपर को लेके गए होंगे। Don't get too stressed out about finding the perfect title.
The important thing is finishing the essay and letting people read it. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ ٹائٹل کا سیکشن ہے اس کو بعد میں جو ایگزیکٹ ٹائٹل ہے ویسے آپ فور ٹائم بینگ آپ ٹائٹل مینشن کریں کیونکہ اس ٹائٹل کو لے کے ہی آپ باقی کام کر رہے ہوں گے، بٹ اس کو مزید موڈیفائی جب آپ کا امپلیمنٹیشن کمپلیٹ ہو جائے دین آپ کریں، کیونکہ امپلیمنٹیشن کے دوران میں بھی کچھ آپ نے ماڈلز یا کوئی ماڈل کے تھرو کام کیا ہے، میتھڈ یوز کیا ہے، اس سے رزلٹ صحیح نہیں آ رہے، لیٹر آن آپ نے چینج کیا اکارڈنگلی وچ ریفلیکٹ ٹو دی ٹائٹل، تو ٹائٹل اس کے اکارڈنگلی بھی چینج آپ کو کرنا ہوگا. آلسو میک شیور دیٹ اٹ ہیز meaning and will catch your audience attention right off the bat. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ٹائٹل سے آڈینس کی اٹینشن ہونی چاہیے، اس کو کھینچا جائے کہ آپ کا پورا پیپر پڑھ لے. ٹھیک ہے جی. سو ٹائٹل کو چوز کرنا ویری ویری امپورٹنٹ. تھینک یو. ٹوڈے لیکچر از اونلی فار دی selection how to choose the title, select or choose the title. In next video we will discuss how to write the abstract. Thank you so much.